Students, now let us start with exercise 13.3. Question number 1 says a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. बेटा जब एक चीज को मेल्ट कर कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो उसकी क्वांटिटी सेम रहती है. दैट मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. सो हियर for sphere, first we are writing the dimensions. For sphere, it is given that radius is equal to 4.2 centimeter and for cylinder, radius is given to be 6 centimeter. We need to find the height of the cylinder. एक स्फीयर को मेल्ट कर एक सिलेंडर बनाया है. So according to question, volume of sphere is equal to volume of cylinder. Now this means 4 by 3 pi r cube, which is the formula for volume of cylinder, is equal to pi r square h. और हम इसको r dash कर लेते हैं because radius is different in both the case. So sphere को हमने r मान लिया तो वॉल्यूम का रेडियस सिलेंडर का रेडियस हम r dash मान लेते हैं. Now pi gets cancelled off from both the sides. Now this means 4 by 3 into radius of sphere is given to be 4.2. 4.2 into 4.2 into 4.2 is equal to r dash square means 6 into 6 into h. Now this gets cancelled off. 3 ones are 3, 3 fours are 12 आपके पास आ गया और यहाँ से 6 and 0.7 इस तरह से मैंने कैंसिल किया है. 6 7 42 होता है तो 6 और 0.7 एंड सेम हियर 6 into 0.7 0.7. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ h is equal to 4 into 1.4 into 0.7 into 0.7. Now this after multiplication gives us 2.74 centimeter. So height of cylinder is 2.74 centimeter. Now let us do question number 2. It says metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter are respectively melted to form a single solid sphere. Find the height of the resulting sphere. तो यहाँ पर for spheres R1 is equal to 6 centimeter, R2 is equal to 8 centimeter and R3 is equal to 10 centimeter. Now 3 spheres of these radii are melted to form a new sphere. So radius of new sphere जो नया स्फीयर बना इन 3 छोटे स्फीयर को मेल्ट करके हम उसको r मान लेते हैं. So now according to question, volume of 3 small spheres जिनको मेल्ट किया है small spheres is equal to volume of 1 big sphere. Now this implies 4 by 3 pi r1 cube plus 4 by 3 pi r2 cube plus 4 by 3 pi r3 cube is equal to 4 by 3 pi r cube. Now we can take 4 by 3 pi common. 4 by 3 pi common.
अब मैं यहाँ वैल्यूज भी साथ साथ पुट कर रही हूँ. r1 क्यूब मीन्स 6 क्यूब प्लस r2 क्यूब मीन्स 8 क्यूब, r3 क्यूब मीन्स 10 क्यूब is equal to 4 by 3 pi r cube. Now beta this 4 by 3 pi gets cancelled off. Now we are left with 216 plus 8 का cube 512 plus 1000 is equal to r cube. So 1728 is equal to r cube और r cube is equal to 12 cube. 1728 12 का क्यूब होता है. This implies r is equal to 12. So radius of new sphere is equal to 12 centimeter. Radius of new sphere is equal to 12 centimeter. Now let us start with question number 3. It says a 20-meter deep well with 7 meter is dug, with diameter 7 meter is dug, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब बेटा जो वेल है दैट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, उसमें से जो मिट्टी निकाली उससे प्लेटफॉर्म बनाया. नाउ द प्लेटफॉर्म के डायमेंशन हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है. दैट मीन्स द प्लेटफॉर्म इज क्यूबॉइडल इन शेप. तो जो कुएं में से मिट्टी निकली वो जो है उससे क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बना. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म. नाउ फॉर वेल और फॉर cylindrical well, let us write the dimension first. For cylindrical well, हमें cylindrical well की dimension दी हुई है. It is 20 meter deep, so h is equal to 20 meter, and it is said diameter is 7, तो radius क्या हो जाएगा 7 by 2 meter. And for cuboidal platform, L is equal to 22 meter and B is equal to 14 meter. और हमें क्या फाइंड करना है? H फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है of the platform. So according to question, volume of earth dug out is equal to volume of platform formed. Now volume of earth dug out, क्योंकि cylindrical shape का well है, pi r square h is equal to क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म है, क्यूबॉइडल, तो उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू, अब मैं यहाँ पर h डैश मार्क कर रही हूँ बिकॉज हाइट अलग अलग है. सो पाई मीन्स 22 by 7, रेडियस ऑफ द वेल 7 by 2 इंटू 7 by 2, height of the well it is 20 meter deep, so 20, length into breadth 22 into 14 into h dash. Now this 2 11s are 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 10s are and ये 11 2s are, so now we are left with 7 2s are, ये भी हो गया कैंसिल हमारे पास, and ये 2 5s are, that means h is equal to 5 और ये h dash 2h dash is equal to 5, so h dash is equal to 5 by 2 or 2.5. So height of platform is equal to 2.5 meter.